Good afternoon, all of you. So that day we were discussing smaller states. We ended that, and what has been the impact of linguistic reorganization? That I told you. No? Caste, role of caste, and rise of regionalism, coalition politics. So that we'll do later on also in the post-independence section. Okay. So now the sound. Okay. So now let us see the demand of statehood for Delhi. If India, uniform civil code, yeah. आराम से. Will happen to Article 370? ये थोड़ा तो कम करो, ज़्यादा है. थोड़ा सा कम करो, वो ज़्यादा हो रहा है. Nothing will happen to Article 370. What will happen? 370 is a special provision with respect to Jammu and Kashmir. All special provisions will remain special. No. See, uniform civil code, if you think one code for all, then the understanding is wrong. Uniform civil code says state will have a supremacy in determining who will make the law. So that is even there at present. So whatever special provisions etc. are remaining, they will remain. So finally, when we had a discussion on uniform civil code, I gave you the opinion, no need of uniform civil code. Why? Because we are federal country, secular country. दो basic structure हैं अपने, federalism और secularism. Federalism means you don't want uniformity. Secularism, Indian secularism, where you give different communities a right to live according to themselves. ठीक है? So don't write in favor of, and you can say it is already there. State already make laws and it is not prohibited. India is a modern nation state. Fine. So now let us see the demand of statehood for Delhi. So write this, should Delhi be a state? What Supreme Court says? Huh? It cannot be a state. So should Delhi be a full-fledged state? And if not, how, look right, if not, why? And how we can address the governance issues in Delhi. Yeah, how to achieve good governance in Delhi. Now, once like previously, this particular question came from this part. You can write one previous year's question on Delhi. So something similar can come now also. Write this question. Discuss the essentials of 69th Constitutional Amendment Act and its anomalies.
anomalies, ANAMOLIES, इसके क्या क्या contradictions हैं and its anomalies, and if they had resulted into the conflicts between the elected representatives and the institution of Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Full stop. Do you think this will give rise to a new trend in the functioning of federalism in India? फिर एक और लिखो क्वेश्चन, ये तो यूपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ चुका है। एक ऐसे इमेजिनेटिव क्वेश्चन लिखो, डिस्कस the complexities involved in arriving at a workable political and administrative solution in light of international experiences of the governance of capital cities. और एक लिखो राइट, डिस्कस द implications of the of Supreme Court with respect to the administration of Delhi in आप versus Lieutenant Governor of Delhi case 2018. ठीक है. Now I think out of the most complicated is the UPSC which has asked this UPSC question. तो वो वाला देखो, discuss the essentials of 69th Amendment Act. एक तो features of that amendment and anomalies. Anomalies को underline करो. How are we going to explain these anomalies? And if they had led to recent, वो तो हो गया. And do you think this will give rise to new trend? Underline करो, new trend in the functioning of Indian federal politics. Now what is this new trend? You need to think which new trend, या अभी इस judgment को ऐसे भी link कर सकते हैं, how this judgment give rise to the new trend. और ये GS का question है, इतना complicated, factually भी पता होना चाहिए. Okay, so
and then you have to compress and write it in 150 words, and so many part of that particular question. Okay. So now let us understand the present system of administration in Delhi and what are the anomalies in that system of administration and what is the way forward in the light of international experience. So the very first thing is, for any system of administration, it stands for what? What is the objective of any system of administration? Any system of administration is to provide good governance to the people, and that is the ultimate objective. Okay. So we have to see how there can be a good governance. For example, as rightly mentioned by Supreme Court, 69th Amendment Act. This particular act, what would have been the objective? To provide good governance. And the situation of administration in Delhi before 69th Amendment Act and after 69th Amendment Act, if it remains same, then what was the purpose? That was certainly not the purpose. Now, but the thing is, Delhi has its own complexities concerning it's a national capital territory. The embassies are located here, ministries are located here. So obviously it has to be a special case, and we have to see that we cannot have a complete free hand in giving complete freedom or making Delhi a complete state, but whether within the given framework of the constitution is it possible. And the another thing is whether or why such ugly scenes after all emerge, and why not the constitutional functionaries, they act according to the spirit of the constitution. ठीक है. अब 69th अमेंडमेंट एक्ट ही फ्लॉड है, तो उसके लिए अंबेडकर का व्यू है कि हाउ सो एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, इफ वी आर नॉट गुड इट विल फेल. अब 69th अमेंडमेंट एक्ट सही है या नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन है दोज हु आर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इंटेंशंस आर करेक्ट और नॉट. So if intentions are correct, situation. Have you understood this? So anyway, this judgment, doing it very timely so that you will understand also. I also have to read the articles. आज ही आया है ना 2-3 papers में. But I will advise, if you read the original judgment, ठीक है, original judgment, because that judgment and its importance go beyond this specific case. There are many important terms mentioned in the entire text of the judgment, like constitutional propriety, constitutional morality, objectivity, democracy, basic structure. So for besides this, for very other purposes also, it will be useful if you give a reading to understand the system and how system should work. Many technical terms like what is purposive interpretation, what is literal interpretation is given in that judgment. Okay. So now
administration of Delhi, or the purpose of any administration, is good governance. And good governance, what is a simple feature of good governance? So it is a universal fact that without involvement of the people, there cannot be a good governance, because power corrupts. So accountability has to be there, and that is why democracy is important. Okay? So sometimes if there is a, or you say that judiciary getting biased in favor of democracy, so sometimes biasness is also okay. So far, democracy remains the very fundamental basic structure. There are two basic structures mentioned in this judgment: federalism and democracy. These are the two parameters which has to be taken into consideration. And political system is evolving. So as the system evolves, political maturity comes. So obviously you need to think in a different manner. You cannot have a very static view of the system that is existing. इस बात को समझ में आया? तो बेस तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है. विदाउट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी भी क्यों? बिकॉज यू नीड अकाउंटेबिलिटी. बिकॉज इफ अकाउंटेबिलिटी विल नॉट बी देयर, देन पावर विल बी करप्टिंग. तो इस कीप दिस इन माइंड. Constitution also stands for what? Whatever federal system, etc. People are not the means. People are end in themselves. You have to provide good governance to the people. इसीलिए rule of law है. इसीलिए किसी भी functionary को cannot act in an arbitrary manner. And उस judgment में what they have mentioned, you cannot go for the mechanical reading of your powers. जैसे LG can refer a matter to the president, doesn't mean you keep on referring every matter. तो जो literal words हैं, उससे भी ज़्यादा you have to understand the intention. What is the intention of this? And there is no scope for any constitutional authority to play, and along with the written words of the Constitution, the spirit of the entire system, why LG has been given this power, that is more important rather than this power and he has to use it all the time. So letter of the law and the intention of the law, both is important. Is this clear? You have understood this? So that debate part we will do later, but first thing we have to understand the system of administration in Delhi. Is this clear? So now first, let us first see what is the system of administration in Delhi. And are we not doing the same thing which Britishers used to do? Government of India Act 1919, the governor and the bureaucrat, they were non-cooperative with the ministries or not? It's the same thing you are repeating. Can it, when it was not justified then, how come it is justified now when it is being done by your own people? Is this clear? So whatever was happening then, same thing is happening now. Is that clear? So now, and so what is the system of administration? Here, first of all, write Delhi is a union territory.
ठीक है. तो where in which schedule there is a list of state and union territory? First schedule. In the first schedule, Delhi is placed in the union territories, so Delhi is union territory. Fine. But union territories, India is what? Asymmetrical federation. So different union territories, they have different system of governance. Is this clear? So Delhi is a union territory under schedule 1. Fine. So basically, what are union territories, right? What are union territories? When this union territories came into existence? 1956. Okay? On the basis of, first listen and then write. So on the basis of the recommendations of State Reorganization Commission. Before that, there were part A, B, C, D state. So C and D state, D state में था Chief Commissioners provinces. Okay. So State Reorganization Commission had changed it, and it has just given two categories, the full-fledged state and union territories. Now, different union territories, why these territories are kept under union? There is their own reasons. Okay. For example, maybe Andaman and Nicobar. The reason can be strategic, or for example, Pondicherry, rest of Tamil Nadu. So maybe the Tamil Nadu has been under the British administration, Pondicherry under French administration, so there has been differences. Some territories may have the cultural difference from the adjacent state where they cannot be merged, or they may have their own independent history, or even if their size is big enough, they are not economically viable, or disputed issues like related to Chandigarh. So there is not one particular reason why the particular territory is a union territory. So each union territory is a case which is sui generis or specific in its own context. But why Delhi is important? So Delhi is important if you compare Delhi's population with the population of other. So Delhi's population is one, or you can say had Delhi been the state, Delhi would have been the 10th largest state in India. Okay. And as per future estimation, Delhi will become the most populated metropolitan territory in future also. Okay, so Delhi's case and the case of other, each case is unique in itself. Is this clear? So what are the union territories? Right, State Reorganization Commission in 1956 suggested that there will be only two types of territories, two types of units. First is full-fledged states. Second, union territories, comma, right, before 7th Amendment Act. अब ये किससे हुआ? 7th Amendment Act.
before 7th Amendment Act, there were 4 categories of federal units. So part A, B, C, D, mostly part C states have been the union territories. अब बहुत सारे तो part C states have been merged with the state. तो वो वाले लोगों के पास तो वो राइट है जो स्टेट में है, लेकिन दिल्ली तो स्पेशल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और इंडिया है डेमोक्रेसी, लेकिन लीस्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दिल्ली में है, तो वो अपने आप में ही एक एनोमली है, ठीक है. सो दिस इज ओरिजिन. Now write, what is the system of administration for union territories? Right, it is discussed in Article 239, Article 239 as such, Article 239. Now basically what are union territories? These are centrally administered territories, ठीक है. अब centrally administered है, but it does not mean that they will be treated as a part of a central government. इनका बजट सब कुछ अलग होगा. They are centrally administered but they have their own. अगर कभी केस होगा तो अगेंस्ट यूनियन टेरिटरी अगर केस है तो वो अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा, ठीक है. अब यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेशन की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी is given to whom? President. Ultimate, जैसे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बाकी सब जगह in all states ministers will be appointed by governor, but in case of Delhi president, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज विद द प्रेसिडेंट. एंड व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? द कॉन्स्टिट्यूशन सेज प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर थ्रू अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम. इज दिस क्लियर? एंड if required, then the governor of an adjacent state can also be given the charge. And when governor, मतलब ये तो common sense है, that if a governor of an adjacent state is given the charge, so when that governor will conduct his work, he is not to act on the aid and advice of the ministry. अब तुम लोग के पास PM बख्शी है, लाए हो, खोलो उसे. घर पे है, मोबाइल में भी है. अच्छा, इसको खुद से जब when you will read it, you will get a confidence. ठीक है, तो that's why मैंने कहा इसको लेके आना है. ठीक है. So आर्टिकल 239 सब कितने लोगों के पास है? बहुत ही कम लोगों के पास है. ठीक है, जहाँ इतना खर्चा कि एक खरीद लेना और. ठीक है, तो उससे जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे डर लगता है वो डर नहीं रहेगा. ठीक है, तो अब फिर जब तुम लोग के पास है ही नहीं तो रीड करके कोई फायदा नहीं मेरे पास. ठीक है, तो अब सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल लिखो क्या है. व्हाट इज द आर्टिकल
239, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, the responsibility for administration of Delhi, of every union territory lies with the president. Underline कर दो president, ठीक है। Point number 2, no, wherever president is written you should read prime minister. president क्या है? nominal head है, ठीक है, तो नाम के लिए है, असलियत में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो जहां पीएम लिखा होता है वहां प्रेसिडेंट ही पढ़ा जाता है, सॉरी प्रेसिडेंट लिखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ही वो होता है। तो इमरजेंसी भी कोई प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या प्रेसिडेंट की पावर है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही है, तो वो नॉमिनल हेड है। प्रेसिडेंट हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर only in form of pocket veto. Second, in a situation where it is a hung parliament, ठीक है, और in a situation when prime minister advise him to dissolve the house, he can explore an alternative government. Is this clear? But exam में कैसे लिखोगे? एग्जाम में तो जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम रहेगा तो उसमें तो करेक्ट ऑप्शन वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ओके। सो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। अब पॉइंट नंबर 2, अ प्रेसिडेंट विल नॉट एडमिनिस्टर अलोन, इट इज ऑल्सो रिटन दैट इट विल एडमिनिस्टर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर it through an administrator, ठीक है। Now who will appoint the administrator? President will appoint the administrator. Now is it necessary to use the term lieutenant governor for all administrators? No. So that title can be any title, whatever president can thinks fit, okay. So now third point is administrator to be appointed by president. Next, right, there is no specific designation for the administrator. Next, president can appoint the governor of a state as an administrator of अब एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी होना ज़रूरी है या कि कहीं का भी कहीं भी? कहीं का भी कहीं भी। भाई अब तो वो भी है, एयरप्लेन रेन भी है, फ़ोन भी है, जा सकते हो आ सकते हो, ऐसा लग रहा है तुम लोगों? नो, इट हैज़ टू बी एडजॉइनिंग टेरिटरी। यूनियन क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ
इन्वर्टेड कॉमास में लिखो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, right, when governor of the state will act as an administrator comma he shall act independently of the council of ministers, independently of the council of ministers, ठीक है। So now it is to be administered by president, एक तरीके से union government. Union government can bring laws for the administration, or यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ब्रिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आए 2015 में, और बाय दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे हैव स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। इज दिस क्लियर? तो यूनियन गवर्नमेंट इट कैन ब्रिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। लिखो राइट, right, union government can bring an executive order for the administration of territory, या rules बना सकते हैं। तो जैसे rules दिल्ली के लिए हैं, rules govern नहीं भेजा, किसको भेजा? लेकिन एक्सप्रेस में आया शायद, आई हैव टू सी, एक्सप्रेस में तो आया ये। चलो एनीवे, तो ये लास्ट पॉइंट लिखा, मतलब यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स या रूल्स। नेक्स्ट लिखो, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक law. Parliament can also make law for the administration of the union territories. तो सिचुएशन ये है कि if Parliament will make law, President will administer according to it. In case it is not there, it can administer according to itself. ठीक है? तो क्या आर्टिकल में दिया हुआ है? Subject to the law made by Parliament, the administration of union territory is in the hands of President. ये समझ में आया? Administration of union territory. Now you write right, each union territory is a specific case
and hence there can be variations in the system of administration. अब लिखो राइट नेक्स्ट, राइट Delhi and Pondicherry. Delhi and Pondicherry have their own legislative assembly and council of ministers. ठीक है, अब ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंफॉर्मेशन है, लिखो आर्टिकल 240. तो इस आर्टिकल को भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ 239 डबल ए पता होना चाहिए और कोई आर्टिकल वार्टिकल याद करने. Right, power of president to make regulations for peace, progress and good governance of the union territories of first लिखो अंडमान एंड निकोबार, नेक्स्ट लक्षद्वीप, नेक्स्ट दादरा एंड नागर हवेली, नेक्स्ट दामन एंड दीव, नेक्स्ट पुडुचेरी और पौंडीचेरी, पुडुचेरी. अब इसमें यूनिक पार्ट क्या है, दिल्ली नहीं है लेकिन पुडुचेरी है, ठीक है, अब चंडीगढ़ नहीं है. इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या है, व्हाट इज द यूनिक, लिखो राइट, व्हाट इज द यूनिक पार्ट इज, पहला यूनिकनेस तो यही है कि चंडीगढ़ इज नॉट मेंशन्ड. नेक्स्ट दिल्ली इज नॉट मेंशन्ड but Puducherry is mentioned. ठीक है, नाउ राइट, ऐसे लिखो राइट, स्पेशल प्रोविजन फॉर पुडुचेरी. So in context of Puducherry, President will make law for good governance, peace and other thing only when
द असेंबली इज नॉट देयर, ठीक है। बाकियों में तो वैसी असेंबली नहीं है, बाकियों के सेम प्रोविजंस हैं, लेकिन व्हेन असेंबली डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन। Right, right, such law will be made only when the assembly of Puducherry is either dissolved or suspended, either dissolved or suspended, ठीक है। So now there is also one article which is important only from prelims point of view, लेकिन आर्टिकल नहीं याद करना है। प्रीलिम्स में कभी कभी क्या दे सकते हैं, नेम ऑफ द हाई कोर्ट एंड मैच विद द यूनियन टेरिटरी, तो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखना है, ठीक है। तो यहीं पर लिख सकते हो आर्टिकल 241, राइट, पार्लियामेंट में बाई लॉ constitute, Parliament may by law constitute the High Court for any union territory or can declare any court existing in such union territory as High Court or High Court of any other state can be declared as the High Court of Union Territory. तो इसमें पहला लिखो चंडीगढ़। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट कौन सा है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा। लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट। पौंडीचेरी मैड्रास हाई कोर्ट। पौंडीचेरी मैड्रास हाई कोर्ट। अंडमान एंड निकोबार कैलकाटा या कोलकाता हाई कोर्ट। देन दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव नो गोवा। दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव मुंबई हाई कोर्ट। और तुम लोगों ने वो होमवर्क किया था जोनल काउंसिल्स, कहाँ कहाँ किसके सेंटर, कौन कौन सा स्टेट किस में आता है। नहीं, गोवा की बात नहीं करे ना, गोवा तो स्टेट है।
बट गोवा तो स्टेट है ना. हाँ, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन हाउ मेनी हाई कोर्ट्स, मतलब कौन सी यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट कौन सा है, बस इतना ही देखना है. ठीक है. नाउ this is in general, the provision is, now write special provisions with respect to Pondicherry and Delhi. तो पौंडीचेरी का भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी नहीं आने वाला जब तक कुछ होगा नहीं वहाँ. ठीक है. तो पौंडीचेरी 239 ए वे जो बड़े वाले होते हैं वो सब अमेंडमेंट वाले होते हैं, और 239 AA दिल्ली. ठीक है. तो फर्स्ट लिख लो पौंडीचेरी 239 कैपिटल A. Right, added by 7th Amendment Act. Seventh Amendment Act 1956, on the basis of State Reorganization Commission recommendation 1946. Now, right, it provides, sorry, 1956, 7th Amendment Act. Next, it provides for legislative assembly. ठीक है. अब legislative assembly, it can be elected, it can be partly elected, partly nominated, कैसे भी हो सकती है. तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, right, either elected or partly elected and partly nominated. ठीक है. बाकी इसका कुछ नहीं चाहिए. अब नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस विथ, फिर इलेक्टेड और देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एक तो है लेजिस्लेटिव असेंबली, नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन पौंडीचेरी. अब इसके प्रोविजंस की कोई ज़रूरत नहीं है. The provisions, powers, this will be all determined by Parliament by law. So Parliament has brought Union Territory Act, and according to that Pondicherry is governed, which is more or less similar to what is there in Delhi. But in comparative terms में you can say that LG of Delhi is having more powers than the LG of Pondicherry. ठीक है. तो यहाँ पर एज अ नोट यू कैन जस्ट राइट, राइट, the administration of Delhi and Pondicherry is almost similar. Right, the administration of Pondicherry is guided by Government of Union Territory Act
governed by Government of Union Territory Act 1963. ठीक है, हियर यू, इसमें सेकेंड पॉइंट लिखो कि राइट LG ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, is more powerful than the lieutenant governor of Pondicherry या पुडुचेरी. ठीक है, अब इन व्हाट सेंस मोर पावरफुल, तो दिल्ली के केस में 3 सब्जेक्ट्स को बाहर रखा गया है फ्रॉम द स्कोप ऑफ द लॉ मेकिंग ऑफ असेंबली, जैसे पुलिस, लैंड एंड DDA. तो इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें फिर दिल्ली में डायरेक्टली आ जाती है. यूनियन गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू द LG, चाहे वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, उस टाइप का कोई एक्सक्लूजन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पौंडीचेरी में नहीं है. दो provisions are very much similar, that even the governor of that union territory can also bring or reserve a bill and all that is there. Is this clear? So right, in case of Delhi, the legislative assembly does not have power to legislate on 3 subjects. First, police या law and order. Second, land. Third, DDA. Law and order. Public order, entry number 1, public order you write. हाँ, public order, police and land. You just write not DDA, land उसी में आ जाएगा. Public order, police and land. जो स्टेट लिस्ट की एंट्रीज हैं, स्टेट लिस्ट की एंट्रीज में 1, 2 and 18 लिखो, जस्ट ऐसे नोट करके. राइट, आई एम जस्ट रीडिंग स्टेट लिस्ट की जो एंट्री है. स्टेट लिस्ट एंट्रीज में पब्लिक ऑर्डर फर्स्ट आता है, पुलिस सेकंड आता है. ठीक है, तो दैट इज एक्सक्लूडेड. तो दिल्ली से एक्सक्लूडेड है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. पब्लिक ऑर्डर 1, पुलिस एंट्री नंबर 2 एंड लैंड एंट्री नंबर 18. ये समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो बाकी रेस्ट वही सब है. दे कैन रिजर्व द बिल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दे विल रिजर्व द मैटर फॉर द प्रेसिडेंट. सो नाउ लेट अस कम स्पेसिफिकली टू आर्टिकल या स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली. देखो, स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली. So when Delhi became the capital? 1911. And initially Delhi was a part of state of Punjab. So from the state of Punjab it has been carved out. And who was the Governor General? 1911, Harding. Okay, so Harding was the Governor General at that point of time. What was the reason to shift
the capital from Kolkata to Delhi? Main reason was nationalist movement in Bengal. Okay, so that particular threat, so they have shifted. Besides the location, वो तो अलग reason है, but Calcutta से shift करने का एक बहुत बड़ा reason था. Okay, that जो nationalist movement was going on. Okay, so administrative convenience is the main reason for shifting the capital. Is this clear? Now, Delhi was initially made a chief commissioner's province. The chief commissioner province means there, like it was under the special radar of the union government. And at the time of independence, when the committees were set up, so even with respect to Delhi, committee was set up with respect to the administration of union territories. And which was that committee? It was headed by Pattabhi Sitaramaiah. Okay. Now the committee held that because of the special position of Delhi, it cannot be made the full-fledged state, but at the same time, the people of Delhi, they should not be deprived of their right to participate in the governance. Means some model has to be formed where Delhi remains under the central government in terms of security. एक harmonious construction करना पड़ेगा between these two aspects. Is this clear? So first, you can just write a little bit history of Delhi. Right, first made and it was first made as a capital in 1911. Next point, it used to be administered as Chief Commissioner's Province under Government of India Act 1919 and 1935. Next, right, a committee headed by Pattabhi Sitaramaiah was set up in 1947 to determine the system of administration for Chief Commissioner provinces. ठीक है, तो normally तो they were merged with some or the other state. ठीक है, right? Delhi emerged as a unique case. First, लिखो neither to be merged
Next, not to be made independent. Sorry, not to be made complete state. अब लिखो y. Right, right. As per the international norm, with respect to the capital cities. Capital cities. First, इसमें लिखो first, location of embassies, international organizations and their offices. फिर ministries, ठीक है. तो again, like earlier, it has to be closely watched by the union government, and because it is a capital city, you have to pay special attention to the infrastructure also. And then as a state, maybe Delhi would not be able, because जो class of infrastructure in comparison to other है, तो उसके लिए भी क्या है, states के पास तो वैसे भी resources है नहीं. तो if Delhi becomes a state, it's not that it is going to gain everything. Okay, nothing will change much. Okay, and maybe becoming Delhi a full-fledged state is not the best. What is to be there? एक तो ऑप्शन बेस्ट तो होना चाहिए, बट बेस्ट प्रैक्टिकेबल भी होना चाहिए ऑप्शन. ठीक है, तो दिल्ली क्या है, लूज कर सकता है रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एक कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी है. तो एक तो ये कैपिटल सिटी के साथ प्रॉब्लम्स हैं. एंड इफ यू कंपेयर विद द वॉशिंगटन डीसी, एटलीस्ट दिल्ली हैज़ मोर पावर्स. वॉशिंगटन डीसी, दिल्ली के तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, बट इन वॉशिंगटन डीसी दे हैव अ रिप्रेजेंटेटिव बट दे डू नॉट हैव राइट टू वोट. ठीक है, तो कोई उस तरीके का से ही नहीं है. उसके कंपैरिजन में दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ फिर भी थोड़ा ज़्यादा ऑटोनोमस है. ओके, सो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशंस. तो considering these complications, they held that Delhi cannot be made full state, but the people should have right of good governance. Is this clear? So right. So what Supreme Court said, Delhi can be a full state? No, same thing, right? Right, considering the above scenario, committee rejected making Delhi a full-fledged state, yet it recommended that the people of Delhi should not be deprived of their right to self-government. Underline कर दो, right to self-government,
which is available to the persons living in the smallest village. ठीक है, उसमें कई लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो फेवर भी कर रहे थे, बट अंबेडकर एंड नेहरू दे वेयर नॉट इन फेवर। तो जो सबसे ज़्यादा फेवर में थे लीडर वो थे देशबंधु गुप्ता। उनके नाम पे कुछ रास्ते वास्ते भी मैंने देखे हैं दिल्ली में, है ना, देशबंधु गुप्ता रोड यहीं कहीं है आसपास। ओके, हाँ, ओके। सो जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पट्टाभी सीतारमैया कमेटी। और आइडिया ये था कि स्टेट नहीं बनाएंगे, लेकिन जो लोकल गवर्नेंस होगा दैट शुड बी अ पावरफुल सिस्टम। इज दिस क्लियर? तो अब लिखो, या लंदन एंड दिल्ली, लंदन, हाँ। अब क्या है, सिस्टम स्टैटिक नहीं है, तो लंदन में उन्होंने डिवीजन किया है। जैसे यहाँ पर एक डिमांड है, वो मतलब वाजिब है डिमांड कि जो ल्यूटियन जोन है उसको यूनियन गवर्नमेंट अपने अंडर में कर ले, बाकी रीजन को दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में कर दो। तो लंदन में मेयर एक तो है डायरेक्टली इलेक्टेड, फिर लंदन में जो पुलिसिंग है दैट इज अंडर द लंदन मेयर। लंदन में पैरेलल पुलिस है, एक है लंदन पुलिस, और जो स्पेशल केसेस या सेंसिटिव मैटर्स या उस तरीके के लिए, उसके लिए स्कॉटलैंड यार्ड। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारा दे गो फॉर इनोवेटिव सिस्टम्स। तो वहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी पुलिस है। ऐसे पुलिसिंग इज़ नॉट ऑल्सो सो मच सेंट्रलाइज्ड जितना यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन कर दिया है, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। तो थिंग्स आर चेंजिंग, तो अपने यहाँ भी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। मॉडल्स, यू कैन लुक फॉर लंदन मॉडल, यू कैन लुक फॉर बर्लिन मॉडल, कई भी और भी मॉडल्स देख सकते हो, यू कैन हैव योर ओन मॉडल। एग्जिस्टिंग मॉडल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब एज अ प्रिकॉशन लिखे गए हैं कि गवर्नर रिफर अ मैटर टू द प्रेसिडेंट। ऐसे नहीं लिखा है गवर्नर सारे मैटर को लेके जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रिक्वायर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड ना, सिस्टम कैन कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस ऑल्सो। अभी समझ में आया? तो जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अब लिखो व्हाट कैन बी द बेस्ट अप्रोच, या व्हाट वाज द फॉर्मूला। फॉर्मूला जो आ गया फर्स्ट, राइट, दिल्ली नॉट टू बी द स्टेट, not to be the state. Next, to be controlled by union government. Third, right, should have a strong local government.
लोकल गवर्नमेंट, तो सीएम क्या मेयर इलेक्टेड सब ऐसे बना सकते हो, और अगर लोकल गवर्नमेंट को ही पावरफुल दे दो, बट फिर भी दिल्ली या एनी कैपिटल इज and its administration has to be in this mess because there has to be overlapping jurisdiction and its problems. Okay. So now the first experiment with the Delhi having its own assembly and the government started in 1951 itself. But the problem which is present today, same problem emerged even at that time. और सेम सिस्टम ही बनाया गया था, असेंबली एंड दिस दैट, जो अभी है वही तभी था. प्रॉब्लम वही था क्योंकि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकली ब्यूरोक्रेसी. If you will keep bureaucracy in the central government, then bureaucracy will not listen to the chief minister also. तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ही खराब है कि इनके कारण झगड़ा हो रहा है, या मोदी. उस समय when पंडित नेहरू was the prime minister, गोविंद वल्लभ पंत was the home minister, that time also the problems came. Ultimately I think the first chief minister was Chaudhary Brahmadatt, okay, या Brahma Kishore something, and he had to finally resign. तो उसके बाद से it became completely ruled by the center. Okay. अब next लिखो, right, in 1951, right, Union Parliament passed an act for the administration of Delhi, comma, similar to the present arrangement. Similar to the present arrangement, right? Delhi had its first elected government in 1952 with Chaudhary Brahma Prakash. अब ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी कवर होता है सब चीज़ें. With Chaudhary Brahma Prakash as the first chief minister, right, very soon problems started over the issues of overlapping jurisdictions and functional autonomy. Right, specifically with the Home Minister, Union Home Minister, GB Pant, Govind Vallabh Pant, and the then Chief Commissioner of Delhi. Chief Commissioner of Delhi. Chief Commissioner है, उस समय वो कैबिनेट सेक्रेटरी, वो मतलब चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं थी. तो अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, सेम कॉन्फ्लिक्ट वॉज देयर. ठीक है, राइट. हेंस इन 1952 itself, in 1952 itself, the chief minister resigned.
तो कम से कम अरविंद केजरीवाल कुछ तो चला लिया वो तो। और सोचो उस समय तो बड़े बड़े लोग थे, नेहरू थे, जिनको तुम लोग इतना डेमोक्रेटिक समझते हो, जीबी पंत थे। उस समय तो इस तरीके के अगली सीन्स नहीं होने चाहिए थे। मतलब तब के लोग और अभी के लोगों में कोई फर्क नहीं है। हाँ हाँ, कांग्रेस की थी, दोनों कांग्रेस। इज दैट क्लियर? सो सेम सिनेरियो हैज बीन देयर। अब नेक्स्ट लिखो स्टेट, लिखो रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। (1953) it was set up, 1956 it gave. So right, it recommended the abolition of the elected government लिखो why। क्या not audible? ठीक है। So it has recommended to abolish, why? Basically dual government, right? Dual government was not helping the administration. Rather deteriorating the administration of Delhi. Rather deteriorating, हालत और ख़राब हो गई। दो सरकार होती तो डबल काम होना चाहिए था। ठीक है। So dual government did not improve, rather deteriorated the administration in Delhi. तो अब इन्होंने एबॉलिश कर दिया। तो उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, जनसंघ वाले, इन लोगों ने मूवमेंट चालू किया। तो उसके बाद फिर दिल्ली का म्यूनिसिपैलिटी एक्ट आ गया, where they have given lot of powers to the municipalities, but that also did not work. Okay, so right, next, right after assembly was abolished, there was protest. And so union government brought first लिखो 1957 Delhi Municipal Corporation Act, comma 1966 another act to create Metropolitan Council, another act to create Metropolitan Council, right? However, nothing worked. Because these bodies could only make recommendations. ठीक है, तो ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद तो बंद ही कर दिया इन्होंने। Then finally this 69th Amendment Act. Yeah. Pardon? लोकसभा, पार्लियामेंट बाय लॉ लिखा हुआ है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी
subject to the law made by parliament. Union territories administered by president. So till parliament does not make law, president makes the rules. So these are all acts made by parliament. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो सिर्फ एक बात कह रहा है कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एलजी शुड लिसन टू द चीफ मिनिस्टर, दैट्स ऑल, एंड डू नॉट गो फॉर द मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स. ओके, एंड ओनली इन द like the LG of Delhi cannot claim to have more power than a governor of a state. So basically judgment क्या है, पूरा गुडविल पर बेस्ड है. हाँ, तो अगर तो solution क्या है, even if they find some best solution then also it will not work. जैसे मैक्सिमम सोल्यूशन क्या हो सकता है जो स्टेट के लिए हो. अब स्टेट कौन सी वर्क कर पा रही है इंडिया में? इंडिया क्या है, क्वाजी फेडरल है. ठीक है, मान लो दिल्ली स्टेट बन भी जाएगा तो भी कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला. तो सब कुछ डिपेंड करता है अगर इंटेंशन सही हो. तो इसीलिए अंबेडकर का वही स्टेटमेंट मैंने कहा था, बहुत जगह यूज आ जाता है, कुछ नहीं होने वाला जब तक लोग नहीं सुधरेंगे. नो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड इफ पीपुल आर एंजल्स. तो अगर एंजल्स नहीं है तो कुछ वैसे ही नहीं होने वाला. ठीक है, लेकिन कम से कम एक क्लैरिटी तो आ गई ना कि द एलजी विल एक्ट विद रिस्ट्रेन एंड द यूनियन गवर्नमेंट विल ऑल्सो, मतलब उनका भी क्या है, इलेक्शन ईयर है, दे कैन नॉट act on their own whims and fancies. तो उनके लिए भी बड़ा important, it's a warning type of a thing, that don't go for dilution of the constitutionalism in the country, though it was not expected because high court judgment was very different. फिर अभी जो इसमें CJI भी थे बेंच में, CJI को वैसे ही माना जाता है कि इज वेरी प्रो गवर्नमेंट, तो इन्होंने भी दे दिया ऐसा जजमेंट, पता नहीं क्या. हाँ, अब सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली डजंट एक्सेप्ट, दैट इज हिज प्रॉब्लम. जजमेंट तो है, ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. ऊपर से तो केजरीवाल तो वैसे भी धरने पे बैठ जाते हो तो क्या है, नहीं करोगे तो खाना पीना नहीं खाएंगे. किसी इंसान के मरने का पाप तो लोगे नहीं. ठीक है, पहुंच गए, अभी कहाँ पहुंचे? यस, तो राइट अल्टीमेटली 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 restored the democratically elected government. अब इन्होंने यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्टली प्रोविजंस ही पूछ ही लिए थे, एसेंशियल्स ऑफ द 69th अमेंडमेंट एक्ट. तो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ द एसेंशियल्स. एसेंशियल्स में ऐसा कुछ खास है नहीं. What is, there will be elected assembly. Second है council of minister, collective responsibility का concept है. अब 91st amendment के बाद सभी जगह number of ministers has been made limited. तो दिल्ली के केस में भी number of ministers, तो वो एक factual part पता होना चाहिए. और powers of असेंबली, तो पावर ऑफ असेंबली से 3 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड कर दिए. और नेक्स्ट क्या है,
3 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड किए तो वो डायरेक्टली अब कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो व्हेन देयर विल बी 2 सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए व्हाट इज अ सिस्टम? द सिस्टम इज LG विल अप्रोच टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी इज ऑन प्रेसिडेंट. इतना तक तो ठीक था, लेकिन आगे गड़बड़ कर दिया इन्होंने. ठीक है, तो आगे क्या है कि इन केस प्रेसिडेंट इज और देर इज अ डिले इन टेकिंग द डिसीशन, तो LG कैन एक्ट एज पर हिज ओन. ठीक है, तो उसके अलावा भी फिर दिल्ली के गवर्नेंस के लिए स्पेशल लॉज हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ no bill will be introduced without the prior consent of the lieutenant governor. ठीक है, plus you have like not transferred, तो जो appointments of chief secretary, जैसे UPSC prelims में क्वेश्चन आया था, who appoints the chief secretary? कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर और गवर्नर? नहीं करता, चीफ मिनिस्टर करता है बाकी स्टेट्स में. दिल्ली में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, इसीलिए इतना आसान तो था नहीं वो क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? कुछ गड़बड़ होता है तभी पूछते हैं. तो उसके लिए क्यों आया था वो पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था. दिस वॉज नॉट क्लियर, टसल था. तो जजमेंट ये था कि बिकॉज Chief Secretary is the person responsible for the administration and Chief Minister is the main person to take decision. अगर Chief Minister and Chief Secretary there will be a conflict, it will suffer. So it is necessary that person has to be the Chief Secretary who enjoys or in whom Chief Minister has the confidence. So that applies for other states, but not in case of Delhi. Is this clear? So these are some provisions, simple provisions. I think याद भी हो गए होंगे अब तो provisions. Okay? इतनी बार तो articles ही आते रहते हैं पेपर में. So you can write a special provisions. So, for Delhi. So first is, right, since 69th Amendment Act, Delhi will be known as National Capital Territory. This is first thing. Up second, it provides for legislative assembly. Second, legislative assembly for NCT, National Capital Territory. अब पौंडीचेरी और दिल्ली में डिफरेंस है. पौंडीचेरी में it can be partly nominated, but दिल्ली में directly elected. Right, it shall be filled by the members chosen by direct elections. Chosen by direct election. Next, right, the number of reserved seats for scheduled castes will be determined by Parliament by law.
तो बाकी जगह तो इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, यहाँ पर पार्लियामेंट बाय लॉ है. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट लिखो, राइट. द प्रोविजंस related to the elections that is article 324 to 327. अब ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं. इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं that will apply related to the election will be applicable in case of Delhi also. अब है अब लिखो legislative power of the assembly. Point number 1, will have power to legislate on the subjects given in the state list comma with the exception of first लिखो public order, next police, third land. या फिर एक तो नेक्स्ट लिखो, राइट. It will also have power to legislate on the subjects in the concurrent list. ठीक है. अब कॉन्करेंट लिस्ट में जो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स प्रोविजन है, सेम प्रोविजन है. इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट the law made by union will prevail. In case the bill has been reserved and has got president assent, same will prevail. ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो concurrent list provisions similar to that of other states. नेक्स्ट लिखो, राइट. even after the creation of assembly comma nothing derogates the power of parliament to make law related to any matter for the union territory. Or its part. और इट्स पार्ट. यानी कि अल्टीमेट पावर्स लाइज विद द पार्लियामेंट. और अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, फिर चाहे वो स्टेट लिस्ट पर ही बनाया हो, तो पार्लियामेंट का ही लॉ प्रिवेल करेगा.
तो इसको बना के कोई फायदा है जब तक कि पार्लियामेंट से कंसेंट ना लो, ठीक है। तो अब ये सब तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स हैं, डजंट मीन दैट you make it mandatory for the chief minister to take the consent each time. Is this clear? Now next लिखो provisions related to the council of ministers. तो अब ये भी प्रीलिम्स के लिए ही रेलिवेंट है। तो राइट, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by chief minister to aid and advise lieutenant governor, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब इसमें यूनिक फीचर्स देखो, यूनिक फीचर्स फर्स्ट, इन केस ऑफ स्टेट्स मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, comma, in case of Delhi appointed by president. अब स्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? नॉट मोर देन 15%, और दिल्ली में नॉट मोर देन 10%. Next, in states, the minimum number of, not minimum, maximum number of ministers cannot exceed more than 15% of the strength of assembly, whereas in case of Delhi it is not more than 10%. अब another unique feature क्या है? Dispute resolution mechanism. Dispute resolution mechanism. ठीक है, तो in other states dispute resolution mechanism exist? नहीं है, क्योंकि वो डिवाइडेड कंसेप्ट नहीं है. दो द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन दिल्ली एग्जिस्ट, राइट. इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिटवीन गवर्नर and the ministers, governor मतलब lieutenant governor and the ministers, comma, lieutenant governor shall refer the matter to the president. अब लिखो वाई, राइट. द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
the administration of union territory lies with president. अब नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखो राइट देयर इज अनदर यूनिक प्रोविजन right according to which if matter is urgent comma lieutenant governor can take the decision as he thinks necessary. Take the decision as he thinks necessary. ठीक है, तो कुल मिला के कोई फ़ायदा ही नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन का. और यहाँ पर मिनिस्टर्स दे आर ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, नेक्स्ट लिखो मिनिस्टर्स आर एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. So these are some provisions and next लिखो provisions related to the failure of constitutional machinery. Failure of the constitutional machinery. So yeah, right, this is similar to the provisions related to the states. Next लिखो provisions related to the ordinances. ठीक है, तो this is also similar, but prior permission of president is required. Prior permission of president is required. Prior permission of president is required. अब यहाँ पर as a note you can write one extra constitution, मतलब constitution में नहीं है, लिखो just issue of appointment of chief secretary. अब लिखो in case of other states chief secretary is appointed by the chief minister. By the chief minister. अब लिखो why. इसमें अब ये भी ऐसे केसेस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस रेफरेंस के लिए लिखो इन रोयप्पा केस ROYAPPA in Royappa case 1974 and in
Salil Sablok case, Salil Sablok case 2013, Supreme Court held that first thing, the position of Chief Secretary is too sensitive. Second, there should be too sensitive. Next, there should be complete harmony. And rapport, R-A-P-P-O-R-T, and rapport between the Chief Minister and the Governor, Chief Minister and Secretary. Next, right, they should share the same vision of the administration. They should share the same vision of the administration. ठीक है, फिर लिखो right. However, in case of Delhi, comma, as per the rules related to the transaction of business, comma, Chief Secretary of Delhi to be appointed by Lieutenant Governor. अब लिखो why. Right, Lieutenant Governor is a real executive. पहली बात, real executive. Next, public order and policing is under the Lieutenant Governor. Next, Chief Secretary writes the confidential report of all senior police officers, senior police officers. ठीक है, और दूसरा है कि पब्लिक ऑर्डर फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में है, तो पब्लिक ऑर्डर के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी है जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज होते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी is again organizing and is the main person, so he has to be in constant touch and rapport with the Lieutenant Governor because of the type of the administration Delhi is having. ठीक है, और next you can write Lieutenant Governor has a responsibility of public order. And hence there is a monitoring committee to review the law and order situation.
review law and order situation. Right, it meets after every 15 days. Right, it is headed by Lieutenant Governor. Lieutenant Governor. Right, it includes Chief Secretary, Home Secretary, and the representative of Delhi government. Now another reason is, you write land, ब्रैकेट में लिखो DDA, DDA Delhi Development Authority is also under the Lieutenant Governor. Right, all land acquisition files, go directly to the Chief Secretary. Directly to the Chief Secretary. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो रियल एग्जीक्यूटिव LG है. ठीक है, so now besides or 69th Amendment Act, it has been introduced on the recommendation of which committee? लिखो, एक ये रह गया था, नोट करके लिखो. राइट, 69th Amendment Act has been introduced on the basis of recommendations of Balakrishna Committee. Balakrishna Committee. तो ये जो present administrative arrangement है, it is based on that committee. ठीक है, अब next you can also write that Delhi is also governed by Government of National Capital Territory, GNCT Act. Government of National Capital Territory Act and the rules related to the transaction of business. ठीक है, अब इसमें you can write that as per these rules, no bill can be introduced without the prior consent of Lieutenant Governor. ठीक है, यानी कि जो 239AA में है इनके पास पावर, उसमें भी दे कैन नॉट मेक लॉ. ठीक है, तो कुछ चीज़ें इन्होंने लॉ में और रूल्स में बना के रखी हुई हैं. तो एज पर रूल्स, और फिर पार्लियामेंट क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? पार्लियामेंट विल हैव सुप्रीमेसी, तो पार्लियामेंट मे बाई लॉ. आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी? तो बाकी जगह क्या है? बाकी जगह अगर हम प्रेसिडेंट और चीफ प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो प्रेसिडेंट रबर स्टैंप है और रियल पावर किसके पास है?
प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दिल्ली के केस में चीफ मिनिस्टर रबर स्टैम्प है, उसको वो काम करना है जो गवर्नर। तो ऐसा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं इन्विसाज किया है वेयर अ ब्यूरोक्रेटिकली इलेक्टेड person is having more power than the person who is elected by the people. Have you understood this? So now the question is, फिर एक और लिखो, right, why, या लिखो what is the problem in the present system of administration. So right, it's a complete chaos, right? It is a chaos. It's a complete chaos. Right? There is no accountability of the administration. अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस। तो एक स्टडी है, वो स्टडी बताती है कि स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए जो जुरिस्डिक्शन है दिल्ली में 17 अथॉरिटीज़ के पास है, ठीक है। स्ट्रीट बल्ब इसके पास, उसके पास, तो क्या है, शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर अ सिंगल वर्क ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो सकता है इफ़ पीपल आर नॉट हैविंग राइट इंटेंशन, जो है तो है क्या, एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड, nothing can happen. It is like making the mockery of democracy, ठीक है। तो एक तो overlapping jurisdiction है, here you write there are multiple set of authorities, multiple set of authorities. authorities में क्या क्या है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट है, इनका अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी की अपनी प्रोग्राम चलते रहते हैं, ठीक है। तो एक तो चलो पार्लियामेंट कुछ भी अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन सीट्स कितनी है दिल्ली की, हाउ मेनी सीट्स, 7 इन लोकसभा एंड आई थिंक 3 इन राज्यसभा। तो कितना आप इम्पैक्ट डाल पाओगे, वो भी तब डाल पाओगे ना व्हेन यू ऑल आर फ्रॉम द सेम पार्टी, तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे भी, ठीक है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, फिर दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। फिर ल्यूटियंस दिल्ली या न्यू दिल्ली के लिए एनडीएमसी, उसके बाद कैंट एरिया के दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। अब कौन सी स्ट्रीट का कौन सा बल्ब किसके अंडर में, ठीक है, इसके लिए ही घूमते रहोगे, ठीक है। सो देयर इज अ वन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ORF, उन्होंने स्टडी की कि एक ही चीज़ के लिए 17 डिपार्टमेंट हैं,
और वो बोलते हैं हमारा नहीं उनका काम है, इनका नहीं उनका काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो डीडीए। डीडीए इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। डीडीए इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। Next, NDMC is under Ministry of Home Affairs. NDMC, MCD, they are under Ministry of Home Affairs. Next, right, next लिखो following departments are under Delhi government. पहले दिल्ली जल बोर्ड, पावर जल बोर्ड, पावर, हेल्थ, हेल्थ में एक्सक्लूड कर दो हेल्थ एंड सैनिटेशन, एक्सक्लूडिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन रिलेटेड जो है वो एक्सक्लूडेड है। हेल्थ एंड सैनिटेशन मतलब हेल्थ में जो सैनिटेशन टाइप का, वो हेल्थ एंड सैनिटेशन रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो एमसीडी के अंडर में। दवा लेने इनके पास जाओ, ठीक है, और बीमार होने एमसीडी के पास जाओ, ठीक है। स्वच्छ भारत वाला एमसीडी के पास है, ठीक है। फिर लिखो एजुकेशन, एक्सक्लूडिंग प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो ये मतलब बाई ऑल एस्पेक्ट्स इट इज अनवर्केबल। अब पीपल डू नॉट नो, अब ये सारा मेनली कौन से लोग हैं? मोस्टली द एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अकाउंटेबल, neither accountable to the people nor accountable to the representatives. Okay, so bureaucracy doesn't listen to the people, they have to move from one place to other, plus they don't listen to the government also. So that is the main reason why there should be either more power or Delhi should be made a state. You can work with different formula, ठीक है। तो आप लिखो राइट, लिखो रीजन और लिखो आर्ग्यूमेंट्स व्हाई दिल्ली शुड बी मेड ए स्टेट। व्हाई दिल्ली शुड बी मेड ए स्टेट। So first of all you can write the population of Delhi cannot be compared with either any of the union territory or the other metropolitan areas in the world. What is the population of Delhi? ठीक है, तो and Delhi is going to be the most populated. This is one thing. हाँ,
population. Exact population. I'll tell how much is the exact. In case I have noted, 18.6 million. Huh? Delhi has become the population with over, इसमें तो 18.6 लिखा हुआ है, 1.86 million, तो 18.6 million, 18.6 million as per 2016, 18.6 million, और इसमें लिखा हुआ है 10th रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 10th है. अगर स्टेट होता तो दिल्ली वुड हैव बीन 10th, नॉट इन द वर्ल्ड, इन दिल्ली, मतलब इन इंडिया. नेक्स्ट, दिल्ली इज एक्सपेक्टेड टू बिकम मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी. by 2028. मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. तो एक तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो यू नीड टू थिंक हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, multiplicity of authorities with overlapping jurisdictions. Next, right, the conflict between the union government and the government of Delhi, specifically when the different parties in power next, right, administration is primarily with bureaucracy. Next, bureaucracy has not been made accountable to the elected government of Delhi. Next, right, because of the lack of awareness, people think that the major flaw lies with the state government. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट. तो मेन चीज है कि अब नेक्स्ट लिखो, राइट, द रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स, comma ugly scenes between the government of Delhi and the bureaucracy. Right, does not give correct impression
करेक्ट इम्प्रेशन? अब इंटरडिपेंडेंस है, फॉरेन डिग्नेटरीज हैं, बिजनेस है, जो बाहर का भी जो कोई बिजनेस वाला है वो भी बड़ा परेशान हो जाएगा, किससे लेकर के कहाँ परमिशन, मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम है ही है. नाउ द क्वेश्चन इज, should Delhi be, right, should Delhi be given statehood? Should Delhi be given statehood? Right, if we look at various expert committees, including Balakrishna Committee, second ARC, Second Administrative Reform Commission, comma, right, the judgments of Delhi High Court, Supreme Court, comma, there seems limited feasibility of giving statehood. Right, second point, there have been various proposals comma, the prominent being keeping New Delhi area or so called VIP area, diplomats ये सब वाला जो भी है जहाँ जहाँ है, under the administration of union government. Right, something like a Vatican City model. Vatican City रोम में जो है उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ऐसा बना सकते हैं, something like Vatican City model. अब सेकंड, ये समझ में आ रहा है इसका? नेक्स्ट, राइट, द स्टडी ऑफ वेरियस international capitals give a mixed picture. Yet none of the capital whether it is Washington DC or London there is complete autonomy or escape from overlapping jurisdiction. Right, next, the situation of Washington DC is worse than Delhi. Comma,
there is no representative of Washington DC. In US Senate, comma, at least Delhi has 3 representatives. ठीक है. Next, Washington DC has 1 representative in the lower house without right to vote. Right, at least Delhi has 7 with right to vote. सेवन विथ राइट टू वोट. अब नेक्स्ट क्या है? राइट, राइट, वी कैन, नेक्स्ट लिखो, वी कैन फॉलो द मॉडल ऑफ लंदन which has a strong local government comma, it has 2 set of police London police and for the issues of greater concern, Scotland Yard. Scotland Yard, full stop. लिखो, it is not necessary that policing has to be centralized. Right, right, the situation of Canberra. Canberra is Australia's Canberra is very similar to Delhi. Canberra is similar to Delhi. So no capital will escape from this problem of overlapping jurisdiction, and because of the sensitivity it cannot be given a complete statehood. तो अब लिखो, what Delhi should ask for. What Delhi should ask for? The answer is more autonomy. More autonomy rather than statehood. ठीक है, ये टेम्पलेट होना चाहिए, ऑटोनॉमी ज़्यादा. तो और क्या क्या सजेशंस हैं दैट वी विल डू टुमारो. तो तुम लोग को समझ में आ गया दिल्ली वाला? फिर स्पीच नहीं हो पाई. स्पीच, एक स्पीच बोली थी ना पढ़ने को. अब कल से